Question number MCQ second we have done बच्चों और कर रहे थे हम लोग. Just open your assignments. Have we done the second question of the module 2? I think we have just started. चलिए देखिए जरा बच्चों. Second question of the module 2. There is a tree between houses of A and B. If the tree leans on A's house, the tree top rests on his window, which is 12 meters above the ground. देखिए बेटा, there are two houses. Let's say this is house A, right? So we have two houses A and B. There is a tree between the houses. Suppose here is a tree. Is this clear? Now this tree, if it leans on house A, then it rests at the window. This is a window of this house, which is at a height of 12 meter. Is this clear, students? बेटा बैठिए जल्दी से प्लीज. स्टैंडिंग. व्हाट हैपन? पहले तो सारे बैठे हुए थे, अभी एकदम से. राइट. So this is 12 meter. If it leans on the house B, the tree top rests on his window. Now this is the window, which is at a height of 9 meter. Right. Now it is given that the height of the tree is 15 meter. Means this is also 15. This is also 15. Is this clear, ji? Right. So what we have to find out? The tree tops on his window, which is 12 meter from the ground. If the tree leans on the B's house, the tree tops rest 12. What we have to find? The distance between A and B. How shall we find this? How shall we find this? Bache, the distance between the houses A and B. By Pythagoras, we can find AD as well as DB. Right? So by Pythagoras, find AD and DB and then add them. And tell me what is the values. Are the students done? हाँ जी बच्चों, कितना आया एडी एंड डीबी? आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी. नो आई कांट हियर यू. चेक करो बेटा, वायर आपकी वो तो रेड ब्लू लाइट आ रही है, बट वायर ए ऑप्शन 21 मीटर. Yes, students. When you find AD, this will comes out to be by multiplying Pythagoras. AD square will be equal to 15 square minus 12 square. So AD square will be equal to 225 minus 144, which is 81, and AD equal to 9. Right? Now see, 9, 12, 15 is a Pythagorean triplet. Here it is 15 and 9. So similarly, this will also be 12. So we have to find AB, which will be equal to AD plus DB. That is 9 plus 12, which is 21 meters. Understood, ji? Any doubt, students? Any doubt? We come to the next question, बच्चों. Now देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is theta.
नाउ इट्स डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखिए जरा डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। राइट, सो देर इज ए लेक, लेट्स से दिस इज अ लेक। राइट, नाउ आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है बेटा? राइट, नाउ there is a point h meter above this lake. This is the surface of the lake. This is the surface of the lake. This point is h meter above the lake. Is it clear? Now, what he says, the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is theta. Now, let's say there is a cloud. The angle of elevation of this cloud is theta. Is this clear, Ji? Then the angle of depression of its reflection in the lake is 45. Now diagram is very important, students. Where its reflection will be there? In the lake. When we have studied the laws of reflection, right? Light वाले chapter में हमने laws of reflection पढ़े हैं. So where will be the reflection? At the same height. Means if this height total is capital H, then this will also be capital H, and here its reflection will be there. Understood the diagram or not, बच्चों? Have you understood or not? See, this is the lake. This is a point h meter above. Let's say this point is A. This point is h meter above the lake. The angle of elevation of a cloud from this point is theta, and the angle of depression of the reflection is how much? Is this diagram clear to all of you or not? Is it clear or not, bachcho? So now what we have to find the height of the cloud is, means you have to find h. The height of the cloud is, you are supposed to find out h. How to find out? Let's say this is A, this is B, this point is C, and this is D. Is this clear, Ji? You have to take two triangles, triangle ABC and triangle ABD. Right? In triangle ABC, which trigonometric ratio we will take? Now let's say AB is here. Let's say AB is X. What will be the height BC? Tan theta is equal to right? Is this clear, bachcho? Yes, sir. What will be the BC? Tell me what is BC? Capital H minus small h. Is this clear? Is this clear, bachcho, or not? Yes, sir. Now we have to find capital H, right? So let's say this is the equation 1. Now comes to the triangle ABD. Here tan 45 will be equal to, now this height. How much will be this height, students? Yes. Big H minus small h. And Big H minus small h. no, this won't be H. If I say this point as E, what is BE? B will be small h. Yes or no? Yes. And what will be the DE? What is DE? आप लोगों ने लाइट पढ़ लिया है बच्चों? फिजिक्स में लाइट किया है ना? Yes. तो what is the laws of reflection? जितना डिस्टेंस बेटा ऑब्जेक्ट का है उतना इमेज का हो जाएगा. If this is capital H, this will also be capital H. Capital H plus H
That will be your BD. BD will be equal to, yes or no? Is it clear? Still doubts? Bachcho, just have a look. This height is h. It is given, right? This will be the height of the cloud, which we have taken capital H. We know that when the image is formed in a plane mirror, lake is acting as a plane mirror. The image is at the same distance as the object is. Yes or no? Yes, sir. So therefore, this DE distance will be capital H and this will be small h. So BD will be equal to small h plus capital H. So what means tan 45? BD over AB. Is this clear, bachcho? Any doubt? So from here, when you solve this, tan 45 is 1. And what is the value of BD? We have taken H plus H upon X. So from here, the value of X is H plus H. Yes. Now let's say this is equation 2. From equation 2, put the value of X in equation 1. From 2, putting value of X in equation 1. तो क्या बन जाएगा बच्चों? Tan theta is equal to over, right? What we have to prove that? We have to find the value of capital H. जिसको simplify कर लेते हैं बच्चों. When you simplify, cross multiply, H tan theta plus small h tan theta. Since we have to find the value of the capital H, so we'll take the terms having capital H on one side. Take small h on the left side. H minus h tan. Is this step clear, bachcho? Yes or no? Yes, sir. H is common. This becomes 1 plus tan theta. Here h is common. It becomes 1 minus tan theta. Since we have to find the value of capital H is equal to h into 1 plus tan theta over, right ji? So which option is there? Which option? First option. B option. A A. है बेटा. A option है. Have you understood the question? This is also from the previous year's question. Any step not clear to anyone? Only important thing in this is the diagram. If you understand the diagram, everything will be done. Right? You should know the bit about the laws of reflection of physics and then how to use that. Right? So diagram is the most important thing in this. In place of variables, there may be some numbers also. Let's say it is given theta. So theta can be given 30 degree, 60 degree, something. Right? Is this clear? And h could have been given some value also. So shall we move to the next one, Jim? And So then we comes to the question number 4. The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. देखिए बच्चों, there is a point A. एक प्लेन फ्लाई कर रहा है बच्चों यहाँ पे. इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
that is given is 60 degree. Right? Now, after a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. Now we are assuming this plane is flying at the same height. After 30 seconds, its elevation changes to 30 degree. Is this clear, Jay? If the jet plane is flying at a constant height of, now this height is also given. This is 3600 root 3 meters. Find the speed of the jet plane. Now how you have to find out? You have to find out the speed. How to find out the speed? Let's say this is B, this is C, this is D. Can we find out this plane has covered the distance equal to BC? Right, Ji? If we can find out this BC, we know the speed, we know the time, so we can find out the speed. So speed we have to find out of the jet plane. Are you getting much or not? If we can find out this distance BC, now we have distance, we have time. Because we know that this distance BC has been covered in 30 seconds. Right or not? So if we can find out BC, we'll come to know about the, what we come to know? What is the speed? Let's say this is AB is X and BC is Y. Let AB is X meters and BC is Y meters. So we have to find BC. So now in triangle EBA, tan 60 degree will be equal to EB over AB. What is the value of tan 60, bacho? Root 3. And what is EB? 3603. Root 3 upon AB is X. So root 3 X equal to 3600 root 3. Root 3 cancel. So X comes out to be 3600 meters. So we have got the value of X. Right, Ji? Now comes to the triangle BCA. And in this again apply the tan 30. What will be tan 30 equal to? BC upon AC. Right, bacho? What is the value of DC? Tan 30 is 1 by root 3. DC is 3600 root 3 and AC is x plus y. अब इसको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. Please tell me the value of y. The y is 7200. 7200. राइट. देखिए बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो व्हाट वी गॉट x प्लस वाई इक्वल टू 3600 root 3 multiplied by root 3. Right? So now this becomes x plus y equal to 3600 into 3. Root 3 into root 3. Put the value of x. So this becomes 10800. And y will be equal to.
So this comes out to be 7,200 meter. Now what we have to find out? Speed of the plane. So speed के लिए we will apply the formula. Speed is equal to distance upon time. What is the distance the plane has covered? 7,200 meter. And what is the time? 30 seconds. So this comes out to be 240 meter per second. Is this clear? So see what is the answer. Achha, answer is given in the kilometer per hour. So we have got the answer in 240 meter per second. Now please convert it into kilometer per hour, students. आता है ना convert करना? बच्चों आता है या नहीं आता है जी? How to convert? सर इन्हीं से पूछो, किसी को खड़ा करो, ऐसे नहीं, स्पून फीडिंग नहीं, इन्हीं में। हाँ जी, वैशाली from section B. Vishali is there. Right. Ravneet Kaur from section A. तो सर 10th ई में कोई पीछे लास्ट बेंच पे जो बैठी है इसको बुलाओ। Jasmeen Kaur from 10E. Jasmeen. बेटा 10th ई में से बेटा मिडिल रो में से लास्ट गर्ल है, येलो शर्ट, कम फॉरवर्ड जल्दी से, कम नियर माइक। 7th क्लास से पढ़ रहे हो, ये कैसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में? जल्दी से बताओ, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे? क्विकली, कम क्विक, आ जाओ जल्दी से। फिर ऐसे बुलाओ क्योंकि रोल नंबर वाइज कई बच्चे इनसे उठा लिए। हाँ जी बेटा बताइए जरा कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। नो वी कांट हियर यू। चलो बैठो बेटा बैठो। एनीवन फ्रॉम सेक्शन डी? बेटा 10th सी वाले अपना माइक ऑन करेंगे, देखिए आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। सर एक बार चेक कीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर अब आ रही है, अब आ रही है। सर किसी स्टूडेंट को भेजिए फटाफट से, देखिए इनको ये आता है कि नहीं। समवन कम। चल बेटे खड़े हो जा, गुरलीन सर ने कहा है खड़े हो जा, खड़े हो जा जल्दी से, आजा आजा माइक पे आ जल्दी से, क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं आता कोई बात नहीं, सर बताएंगे। पहले ये बता दो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बता दो। 1000 मीटर। हाँ। So now how to convert मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर? 9th क्लास में पूरा चैप्टर किया आपने मोशन। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। बट यहाँ तो मीटर पर सेकंड है ना बेटा, इसको कैसे करेंगे? वो ठीक है कि 1000 से डिवाइड करें। हाँ जी, तो आप मीटर पर सेकंड को कैसे करोगे? मीटर को तो कर दिया आपने किलोमीटर में, बट व्हेन इट इज कंबाइंड मीटर पर सेकंड। यस हाँ जी, एनीवन फ्रॉम ऑल द सेक्शन प्लीज सिट डाउन। कोई बच्चा नहीं बताएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई करता है 18/5। 18/5। देखिए बच्चों, हमने 9th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ लिया फिजिक्स में मोशन वाला, और हमें अभी तक तो पता चल जाना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, और रिवर्स करते हैं तो उल्टा हो जाता है जी। 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइड बाय 18/5, राइट? प्लीज डू इट। समझ में आया सबको? और ये क्यों करते हैं ये पता है आप लोगों को? देखिए बच्चों, वी हैव 1 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। व्हाट इज 1 किलोमीटर?
इक्वल टू 1000 मीटर एंड 3600 सेकेंड्स। एक आर में 3600 सेकेंड होते हैं। 20 कट, सो ये कट करके हमारे पास 5/18 आ जाता है बच्चों, राइट। सो दिस इज अ रीजन। चलो जल्दी से मुझे आंसर बताइए जरा। यस, ए ऑप्शन। 64 ए ऑप्शन कैसे आ रहा है बेटा? ये तो मेरे को तो नहीं डी है। ऑप्शन डी ऑप्शन। देखिए बच्चे, इसको कट किया 48 इंटू 18। हाँ जी, 864 आ रहा है बच्चों। दैट इज बी ऑप्शन, किलोमीटर पर आवर, राइट। किसी को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? राइट जी। So we move on to the next question. Question number 5. A man on a cliff observes a boat at an angle of depression 30 degree. अब क्वेश्चन देखिए बेटा, डायग्राम बनाते हैं जी। ये देखिए बच्चे, ये एक, यहाँ पे एक बोट है जी। मैन, हाँ जी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ए मैन ऑन ए क्लिफ, यहाँ पे क्लिफ पे एक मैन है बेटा, राइट। दिस इज क्लियर। नाउ दिस मैन ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. He is observing this boat, and this angle of depression it makes is 30. Is this clear? Diagram is clear to you or not? Yes. Now what he says, which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer, and this boat is moving in this direction. Is this clear? Any doubt? Now what he says, with a uniform speed, 6 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Means this boat has moved to this position after 60 after 6 minutes. So now earlier its position was, let's say, A, now its position is B, and this angle of depression is now 60 degree. Is this clear bachcho? Is it clear? Find the time taken by the boat to reach the shore. What we have to find out, how much time boat has taken from this point to reach this point. Is this clear? Let's say this is A, B. अच्छा, already A B ले रखे हैं हमने जी. This is C. Have you understood बच्चों? So what we have to do? This angle is 30, so this will be. This is how much? As this angle is 60, so this will be. Now we have two right angle triangle, DCB and DCA. Apply the concept of tan theta in these two triangles and solve it. Please do it. अभी एक एक को बुलाता हूं मैं, फिर पूछता हूं बच्चे आप लोगों से. I have explained so many questions of this type. You please do it. और जिसको बुलाया जाएगा वो रिप्लाई करेगा.
हाँ जी, एनीवन कंप्लीटेड द क्वेश्चन? एनीवन कंप्लीटेड द क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों। हाँ जी, नितिन फ्रॉम सेक्शन एफ इज देयर? सेक्शन एफ से नितिन, सेक्शन ई से मनिंदर, मनिंदर सिंह प्लीज कम। बेटा आपको सबके अपना नाम पता है ना? मनिंदर सिंह, हु इज मनिंदर? आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट। हाँ जी बेटा, माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ, यस क्या किया बेटा फर्स्ट स्टेप आपने? फर्स्ट स्टेप क्या किया अभी मुझे बताइए जरा। जल्दी बोलिए बेटा, क्या किया अभी आपने? नहीं किया तो वो बताइए जरा। कर रहे ये कर तो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप कुछ तो किया होगा ना अभी तक? क्या किया अभी तक? यस, कर रहे हैं तो होता तो रहेगा वो, पर होगा नहीं ना जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं करोगे। माय क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? ट्रायंगल हाँ जी, कौन सा ट्रायंगल लिया है? ADC एंड सिट डाउन। एनीवन फ्रॉम सेक्शन डी? कौन एक्सप्लेन करेगा? आप कीजिए बेटा, ये सेकंड बेंच पे जो ग्रीन शर्ट वाली स्टूडेंट है ना, प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन। हाँ जी, क्या किया फर्स्ट स्टेप बेटा आपने? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ अब आ रही। अच्छा, बीच में ना कुछ आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन इज लूज, स्टार्ट होती है वॉइस एकदम से। हाँ जी, ट्रायंगल। नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा। नो, प्लीज सिट डाउन। सेक्शन सी से कोई बच्चा बेटा? सर प्लीज सेंड एनीवन। जितना भी किया सर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं पूरा हुआ नो इश्यूज, जितना किया भेजिए। देखिए बच्चों, मैं एक्सप्लेन करता हूं अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। आपको दो ट्रायंगल लेने हैं बच्चे, एक तो डीसीबी और एक डीसीए। नाउ इन ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी में क्या हो जाएगा बच्चों? डीसीबी tan 60 डिग्री। अच्छा, आप क्या करेंगे? लेट्स से दिस हाइट इज h, हाइट गिवन है कुछ उसमें? नहीं गिवन है, ठीक है। सो लेट्स से दिस हाइट इज x, दिस BC को हम x ले रहे हैं एंड दिस इज y, राइट? लेट AB इज y and BC is x, right बच्चों? So now tan 60 degree will become equal to DC upon BC, right जी?
So tan 60 degree is equal to DC is H upon X. So that means it is root 3. So what is the value of H? Root 3x आ गई बच्चों. Now take the second triangle. In triangle DCA, what is tan 30? It will be equal to DC upon. Is this clear, students? Now tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? What is the value of tan 30? 1/√3. 1/√3 is equal to what is DC? H over x plus y. तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, इनको सॉल्व करते हैं जी. One is h equal to √3x, another is 1/√3 is equal to h over x plus y. Now what we'll do, this is equation 1, this is equation 2. From equation 1, put the value of h in equation 2. So put the value of h. 1/√3 is equal to √3x upon x plus y. Is this step clear, बच्चों? Is it clear or not? Yes, sir. Cross multiplication x plus y is equal to 3x हो जाएगा बेटा. तो √3 into √3x. एक स्टेप एक्सपैंड करके लिख लेते हैं जी, आपको डाउट ना हो. √3x into √3. So x plus y equal to 3x and y will be equal to y equal to 2x. Is this clear, बच्चों? Any doubt? Any doubt, बच्चों? Now come back to the diagram. Now this y is equal to 2x. What is the meaning of this? Means this distance AB is double of BC. यही आ गया ना बेटा? Is this clear? Now how much time it is taking to cover AB? How much time is taking to cover AB? 6 minutes. 6 minutes. How much time will be taken to cover BC? How much time will be taken to cover BC? Simple है ना बेटा? This distance, 2x distance is covered in, see, 2x distance is covered in 6 minutes. Unitary method लगाओ. 6 minutes. So x distance कितना में covered होगा बेटा? 6/2x into x. How much time? 3 minutes. Now this distance is covered in 3 minutes. This is covered in 6 minutes. So how much time it will reach to the shore? हाँ जी, 9 minutes आ जाएगा बेटा टोटल. Is this clear? देखिए A से B तक जाने में 6 minutes लग रहे हैं और B to C जाने में half of the time, that is 3 minutes. So total time will be 9 minutes. Is it okay? Have you understood this or not? बेटा ये यूनिटरी मेथड समझ आया लास्ट तक में जो हमने लगाया है? Have you understood or not? Please tell me. Yes. किन किन बच्चों को नहीं क्लियर हुआ? प्लीज रेज योर हैंड. हाँ जी बताइए बेटा, क्या नहीं क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी. हाँ जी, किस किस को नहीं क्लियर हुआ? प्लीज रेज योर हैंड. चलिए अगर सबको क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी.
Next is assertion reasons. The angle of elevation and angle of depression are always acute angles. Is this statement true? Is this statement true? Tell me, bachcho, yes or no? Yes. Yes. If an observer moves towards the object like a building, the angle of elevation decreases. This is true? False. और देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही आते हैं हम. ये डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए. बोट इज मूविंग टुवर्ड द शोर. एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. पहले 30 था फिर 60 हुआ, तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ बच्चों? इंक्रीज. तो दिस मींस reason is false because angle of elevation decreases, increases, but it is given decreases. नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आंसर क्या होगा बेटा फर्स्ट असर्शन रीजन का? फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स. C option. Now comes to the second question. If the ratio of the height of a tree and its shadow is 1:1, the angle of elevation of the sun is 45 degrees. True or false? देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, ये यहां से सन है, ये सन का एलिवेशन है. तो ये जो कोई बिल्डिंग है या पर्सन है कुछ भी है, सो दिस विल बी शेडो. This is the height of the person. Shadow will be x. If the angle of elevation is 45 degree, so tan 45 will be equal to 1. Therefore, x is equal to h upon x. So this is 1. So h is equal to x. So therefore the ratio of the object and its shadow is 1:1. Right? Ratio of the tree and its shadow is 1:1. Understood जी? इसमें कोई डाउट बच्चों? तो ये ट्रू हो गया. Now comes to the reason. The angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. Is this true? Is it true or not? बच्चे वो ठीक बोल रहा है ना. देखिए क्या है, ये horizontal हो गया. This is line of sight, right? So angle between the line of sight and the horizontal when something is above the horizontal. अगर वो नीचे होगा कोई ऑब्जेक्ट तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. Yes or no? So this is true statement. So both are true. Both are true. Is it the correct explanation? No. So answer will be E option. Right? Now comes to the case study based question. An air to air surface missile or air to ground missile, okay, is a missile designed to be launched from military aircraft and strike ground targets on land, at sea, or both. Okay ji? Right? They are similar to guided glide bombs but to be deemed as a missile. A military fighter plane is flying at an altitude of 600 meters with a speed of 200 kilometer per hour. Right? अब देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि इसका. What he is saying, a military fighter plane is flying an altitude. What is the meaning of altitude, बच्चों? Height. Means a plane is flying at a altitude, मतलब height of 600 meters. And the time is over. क्या बोल रहे हो बेटा? The time is over. First period started. Okay. Right, बच्चों. Thank you very much for joining. Thanks a lot to all the teachers present for your support. Thank you, sir. कल मिलते हैं जी, आगे कंटिन्यू करेंगे.